Namaskar viewers, welcome to DM Astrology. Today on the special occasion of Guru Purnima, with a very short notice, I brought Panditji Devendra Maharaj. You are already known about him in remedial video you might have seen. In Kal Sarpa Dosh Shanti also you have seen him. And he is also running his own channel Devendra Maharaj, that also viewer can visit, whereby he is also providing so many information. The main reason for bringing him today is because of the Guru Purnima. ये जो गुरु पूर्णिमा आ रही है बहुत जल्दी, इस समय पे क्या करना चाहिए? व्यूअर्स बहुत सारी चीज पूछ रहे हैं कि व्हाट टू प्रे, व्हाट टू डू ऑन द गुरु पूर्णिमा. वी ऑल नो दैट गुरु इज spreading the gyan, and there is no value or nothing can be paid against the Guru Dakshina. The Guru Dakshina is nothing but a mere respect or a token or a gratitude we can show, but there's a reality. In reality, you can't pay anything less than tribute to the Guru. So let's see कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम गुरु को अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, हम हमारी भाव दे सकते हैं, क्योंकि उनका दिया हुआ जो ज्ञान है वो तो हम कभी पे नहीं कर सकते. आई ऑल्सो रिमेम्बर टुडेज एज माई ग्रेट गुरु श्री चंदुभाई पटेल, CS Patel sir, and my favorite guru Dr. Mahasukbhai Mehta, MV Mehta. He was very famous as an author. He has written so much books, and that's gurus are inspiring me in my life journey, and today whatever I was there is because of him. You might have seen my Guru Purnima video last year also, whereby I also have given so much informative things about the Guru Purnima, but today especially I brought Panditji to guide us what is the Guru Pujan, how to do the Guru Pujan. So not to spare much time, I request Panditji to give us a blessing and give us a knowledge how to do Guru Pujan. Namaste Panditji. Namaste. So Panditji कृपा करके बताएं. See, the Panditji will speak in the Hindi. I'll make a translation in the English wherever it is possible, so that both the viewers, Hindi and English viewers, can be get the knowledge. Please sir. सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण. और सबसे पहले गुरु जी को वंदन करके हम इस वीडियो का प्रारंभ करेंगे. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सद्गुरु देव की जय. मित्रों, आज हम जो बात करेंगे वो गुरु का महत्व. सबसे पहले गुरु शब्द का अर्थ समझ लेते हैं. गु का मतलब होता है अंधकार और रु का मतलब होता है प्रकाश. जो अंधकार में से हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं वो गुरु है. So he meant to say that the meaning of Guru is a Gu. That's a two word, Gu and Ru. Gu means a darkness and Ru means the brightness. So he is a person who make the person from darkness to the brightness. Also such a lovely explanation. The name itself, see, our Sanskrit and our Vedas are very much knowledgeable. So that's a very good sir. गुरु सबसे पहले हमारे जीवन में, सबसे पहले हमारे गुरु हमारे माता पिता, क्योंकि सबसे पहले हमें शब्द बोलने वही सिखाते हैं. बिल्कुल. पहले गुरु माता पिता, दूसरे गुरु हम जिसके पास विद्या अभ्यास करते हैं, तीसरे गुरु जिसके पास हम आजीविका अभ्यास करते हैं, जिससे हम व्यापार सीखते हैं. ओहो. So he meant to say there are three gurus influencing our life. The first guru is our parents, who teach us to speak. Especially a mother, we can speak as a, but both the parents are always devoting to our life, and he teaches the values of the life. The second guru, he meant to say, who gives us the knowledge of the words, who teach in our school and colleges. And third guru, he means to say that who make us learn with earn.
So who teach us how to learn and how to earn? So all the gurus who teach us, or our ancestor who teach us, the person who teach us how to do trade, commerce, business, and who makes us earning, because second house is the house of money also, and the karak is Jupiter. So we'll learn how to earn the money. Great. Yeah. हमारे जो गुरु हैं, दो प्रकार के जो गुरु हैं, जिस तरह स्कूल किसी टीचर के बिना शोभा नहीं देती, वैसे ही हमारा जीवन गुरु के बिना शोभा नहीं देता। वेरी। हम देखिए, प्रायः हम समझते हैं, देखते हैं कि माता पिता सीए पढ़े हैं, डॉक्टर हैं सब, लेकिन फिर भी वो जहाँ भेजते हैं वहाँ वो टीचर बीएड है, 12th पास है, लेकिन बच्चे को वो वहाँ भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चों को किस तरह पढ़ाना चाहिए। इसी तरह जीवन के अंदर हमको पता है ये कार्य खराब है, लेकिन फिर भी उस कार्य के तरफ हम डाइवर्ट होते हैं, तो वो वहां से हमें वापस कौन लाता है? गुरु। गुरु की कृपा, गुरु का सानिध्य, गुरु का सत्संग। बिना गुरु का सत्संग आप देखिए, जीवन के अंदर गुरु बना के देखिए, आपको पता चलेगा कि गुरु का महत्व क्या होता है। Very true. He meant to say that he is a person may not be present physically, but he will be always, that thoughts he has implanted in your mind will be always there in your mind, and that makes you sometime precaution. It makes you a precaution, and whereby you can come back. Even though if you are reached to some problems and difficulties, by just remembering or by his thought, you might be come back to this. So he is a guru who will always make you away from all the difficulties. Very true. गुरु का पूजन किस तरह करना चाहिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। Now it is very important how to do the guru pujan. देखिए, सबसे पहले पूजा अपनी माता पिता की कीजिए। अगर जो आपके माता पिता आपके साथ है, सबसे पहले गुरु वो है। Oh, so he meant to say, first of all you have to pray your parents. If your parent is alive or you are not alive, first of all you have to pray to them. Then only your real guru will accept your all these your offerings. Yeah, very true. देखिए, आप चैरिटी करते हो, चैरिटी भी कब रिजल्ट देती है? एक इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो गुरु बाहर है, प्रेजेंट आपके साथ में कौन है? आपके साथ में आपके माता पिता है। अगर वो है तो सबसे पहले पूजन उनका कीजिए, उसके बाद आप गुरु पूजन कीजिए। माता पिता का अगर आप पूजन करते हैं तो गुरुजी अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है वो मेरा आज्ञाकारी रहेगा, उसका ब्लेसिंग्स अपने आप ही मिल जाएगा। उनकी दृष्टि में ही उनका ब्लेसिंग्स है। हाथ रखे सर पे और ऐसा करे, उसको ब्लेसिंग्स नहीं कहते। By just a vision only you can get the blessing from the guru. He meant to say that it's not that physically somebody touch you or give the blessing, but just you can face your guru and face his eyes, then the blessing will be already flow to your eyes. So it's not mean that you have to visit physically and you can take a blessing and his hand will be on your shoulder or on your head, then only you will get a blessing. Just you can able to face him, just you can able to face his eyes, that is sufficient, he meant to say. So first of all you have to pray your parents, then only you have to visit your guru, or you can also do meditation. If your guru is at the distance place, you can just remember him by this. Good. अगर गुरु आपके पास, गुरु का सानिध्य नहीं है, समझ लीजिए, तो आप अपने माता पिता का पूजन कर लीजिए गुरु को याद करके, क्योंकि आप जिसको गुरु मानते होंगे हो सकता है आपके माता पिता भी उनको ही गुरु माने। तो अगर आप अपने माता पिता को गुरु मान के उनकी सेवा करेंगे तो आप समझ लीजिए अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं गुरु ही उनके स्वरूप में आके वहां बैठे हैं महाराज। हाँ, बहुत very good, very good. So he meant to say, if you don't go to your guru place and just you are
putting your emotions in your parents and assuming that your gurus are present in your parents itself, so there also the guru can present. And guru, as we know, that the sun is a father, moon is a mother, and Jupiter is a guru, so it has a very good cardinal relation with the sun, moon and Jupiter. So by praying the sun and moon and presuming that your Jupiter is your guru is present, you can do and get a blessing of everything. Your mind, body and soul all get pure when you remember your guru. So easy way to pray a guru, to give the tribute to your guru. अगर आप के गुरु जी की छवि है आपके पास, अगर आपकी गुरु की छवि है आपके पास, तो आप उनको पहले तिलक करें, चंदन से तिलक करें, फिर उनको Chandan is also for the Jupiter. Yeah, that's good to give the offering that Chandan to the Guru. हाँ, गुरु को तिलक करके उनका पूजन करें। अगर छवि है तो, अगर छवि नहीं है और प्रत्यक्ष गुरु आपके सामने हैं, तो सबसे पहले आपको गुरु को, प्रायः गुरु परंपरा में ऐसा होता है कि आपके गोत्र का उच्चार करना पड़ता है। जैसे गुरु के सामने पहले, ये आपको मैं पहले की बात कर रहा हूँ, कि पहले गुरु के सामने विद्यार्थी जब जाते थे तो उनको बोलना पड़ता था उनका गोत्र का उच्चार, गौतम गोत्रोत्पन्नोऽहम् त्रिप्रवरान्वितः शुक्ल यजुर्वेदान्तर्गतमाध्यान्दिनिवाजसनेय शाखाध्यायी देवेंद्र शर्माहं भो गुरुं त्वामभिवादयामि। अपने गोत्र के साथ गुरु को वंदन इस तरह करते थे। It's not that touching the feet of the guru, but he said that if I made any mistake, by just pressing your ears, he meant to say, and just bow down to your guru. But guru will only accept your offering when you are saying that which gotra utpan you are. See, one has to always remember his gotra, because that gotra, in my previous video in the Guru Purnima also I mentioned about the gotra, because gotra is nothing but the following of any gurus. That's nothing but the 7 Sapta Rishis whose follower you are there. So you are saying, you are introducing yourself, being ancestral, that I am following of this. You yourself, what you are doing, suppose I say I am Dharmesh Mehta, that is ego, that you are introducing yourself in front of this. But by Guru Parampara, it says that I am that Gota Utpanna Putra, I am bowing down to you. So I am a follower of that Rishi and I am requesting you to accept my offering. If anyone don't know their Gotra, suppose, they can say Kashyap Gotrotpannoham, means कश्यप ऋषि लास्ट में हुए, और हम सब जिसको गोत्र का पता नहीं है वह सब कश्यप ऋषि के संतान। Okay, out of the 7 Saptarishi, if everybody one is not knowing that which gotra they are utpan, they can write, they can recite as a Kashyap gotra, because Kashyap Rishi is the last Rishi who came in the Saptarishi. So he has so many followers. Those who are left out all comes under the Kashyap Rishi. So one can chant himself that I am a Kashyap gotra utpanna. If you not remember it, then you can say I am this gotra utpanna and I wish you to accept my offer. और उसके बाद गुरु को साष्टांग, अगर प्रत्यक्ष रूप से गुरु आपके सामने है तो हमारी चर्चा वो चल रही है, उसके बाद आपको उनको साष्टांग दंडवत नमस्कार करना है। साष्टांग दंडवत नमस्कार करके, स्त्रियों को साष्टांग दंडवत नमस्कार नहीं करना है, ये बहुत ध्यान रखे। You have to bow down to the guru by flat. Sashtang means you have to flat, you have to become on 180 degree and you have to flat to the Guru Charan. But the Shastriji says that it is restricted to the female. Female should not bow down in the 180 degree. She should not. Yeah. उन लोगों को गुरु को खाली नमन करना है, खाली झुकना है। और गुरु अनुमति देते हैं आपको पाद पूजन का। प्रायः गुरु जल्दी कोई पाद पूजन की अनुमति नहीं देते हैं। जी। विशेष कृपा किसी के ऊपर हो जाए, गुरु की विशेष कृपा दृष्टि बन जाए और उनका हृदय आ जाए शिष्य के ऊपर, ऐसा लाखों में एक ऐसा प्राय बनता है। अगर आप सौभाग्यवंत हैं तो आप उनका पूजन कैसे करें, तो एक तांबे का बर्तन ले या पीतल का या चांदी का, जो आपकी शक्ति अनुसार, उसमें गुरु जी के दोनों पैर रखें, गंगा जल ले, शुद्ध गंगा जल,
न मिले तो कोई भी जल आप ले सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल भी न मिले तो आप गौमूत्र डाल सकते हैं, गौमूत्र भी ना मिले तो आप समुद्र का जल भी डाल सकते हैं, क्योंकि प्रायः सारी नदियां समुद्र में एकत्रित होती है, तो आप उनसे भी उनका पूजन आप कर सकते हैं। पाद प्रक्षालनम उसको बोलते हैं, मतलब पैर धोना। The important first ritual is after praying to Guru, you have to take a permission from the Guru that should I do your Pada Pujan? Pada Pujan means leg, because all the energies is concentrated on your leg, and that is why Lord Krishna has also washed the feet of the Sudama and then he has drink. All our energies are lies in our toe. Basically, in the last video in the Guru Purnima also you can refer. I said that all the power is in the toe. So you have to wash the Guru leg slowly, gently with the Ganga Jal. If you not get the holy Ganga Jal, then you can use any water by adding just sea water, because all the rivers comes near to the sea. They all flow to the sea. So sea water is a very powerful. So you have to first of all wash the feet of the Guru. Yeah. ये गुरु का पूजन हम कर रहे हैं। अगर समझ लीजिए आप गुरु जी नहीं हैं और माता पिता है, तो इस तरह आप माता पिता का भी पूजन वो दिन कर सकते हैं जी। खाली गुरु की बात नहीं है, ये माता पिता का भी पूजन इस तरह ही आप कर सकते हैं। Right. Same way you can do if you are not going to your guru, you can same ritual apply to your parents also. You mean to say. उसके बाद गाय का थोड़ा दूध ले, वो थोड़ा उनके चरण में डाले, वो चरण में डालने के बाद फिर थोड़ा सा जल डाले, उसके बाद नैपकिन से उनका जल साफ करें और इस अंगुली से वेडिंग रिंग से चंदन का तिलक, अनामिका, उनसे आप तिलक करें, थोड़ा सा चावल चलें, थोड़ा पुष्प रखें, एक पुष्प रखें। उसके बाद गुरु जी के मस्तक का पूजन करें। पाद पूजन होने के बाद ही पूजन मस्तक का होता है। हम क्या करते हैं, सीधा मस्तक का पूजन करते हैं। अगर गुरु अनुमति देते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर अनुमति नहीं देते हैं तो नियम पहले पाद प्रक्षालन है, उसके बाद तिलक का है। So you can wash the feet by water, that holy water you have made, then unboiled cow milk. After cow milk again apply the water, and then you can clean the feet of your guru, and then make the chandan tika by this finger, that's anamika finger, that you can ring finger it's called. You can put the chandan tilak and some rice you have to throw. So first after the feet pujan he said that then only you can go for the head pujan. So then you have to make the tilak to the guru, and that's also you have to take a permission from the guru, should I, because after the toe all the energy concentrate in your agna chakra, so you have to put the agna chakra with the tilak, same as this. So that two ways you can offer the guru and you take a blessing. When you are touching the crown chakra, when you are touching the feet, you are absorbing the energy, unseen energy from the guru, and that's all the sadhana done by the guru is also being enter in your body. So that's very important for this. And then what has to be offered to the guru? Suppose someone to have उसके बाद गुरु जी को आप पूजन करने के बाद उनको आप वस्त्र प्रदान करें, clothes should be donated. हाँ, उसके बाद उनको मुंह मीठा कराएं, कुछ भी मोदक वगैरह जो भी आप by sweets, because sweets also come under the guru, and you have to offer the fruits also, because fruits also come under the guru. So you can offer the fruits, you can offer the milk, you can offer the vastra, whatever the clothes you are. और विशेषकर क्योंकि गुरु जी पूरे साल शायद दक्षिणा न ले, लेकिन उस दिन गुरु दक्षिणा का विशेष महत्व है। पैसा अलग चीज है, दक्षिणा अलग चीज है, वस्तु एक ही है, भाव अलग है। पिता की पत्नी और आप उनको माता बोलते हो, व्यक्ति एक है, भाव तीनों में अलग अलग है। इसी तरह दक्षिणा अलग हो जाती है, पैसा अलग। लेकिन उस समय गुरु को अपने शिष्यों का पालन पोषण, जिस तरह पहले क्या था, गुरुकुल परंपरा थी। गुरुकुल परंपरा में सब लोग अभ्यास करते थे साथ में। उसके बाद जो शिष्य बड़े हो जाते थे
वो अपने गृह संसार में व्यापार वगैरह में लग जाते, तो उसके बाद गुरु पूर्णिमा का दिन आता था। तो गुरु को वो पूजन करके उनको यथाशक्ति, जैसे मैं पढ़ा, मुझे खाने पीने की कोई तकलीफ ना हुई, तो गुरु जी आपके आशीर्वाद से मेरी आजीविका अच्छी चल रही है, इस भाव से वो लोग गुरु के चरण में भेंट रखते थे। ये भाव था। दूसरा भाव जो आज हो गया वो भाव नहीं था उस समय। So you mean to say that one has to also offer a dakshina. See, this dakshina is not a money which normally people think. It's something like a gratitude because of the somebody else dakshina he brought up in the Guru ashram. Same way, by offering his own dakshina to the Guru can continue the same parampara and same system to the forthcoming shishya. So those who have already completed their education, they go back to their sansar and they run their business, and out of their business they collect some money and they offer to the Guru, so that the future generation also get the same education as they got. So that gratitude you have to show to the Guru. Whatever the material things you are giving the Guru, it's no value. But what the bhav, what the feelings you put in the things, that's accepted by Guru. Just by show up you are giving so many things to the Guru will not bring anything. That's bring the ahankar, ego. So one has to bow down to reduce their ego. Whatever your name, fame, recognition is there in your commercial field, you should bow down to your Guru, because that reduce your ego. And while giving something to the society, it will again come back to you. So he meant to say that's a very good thing. इसीलिए आप जब गुरुद्वारा जाते हैं, गुरुद्वारा में आप बाहर देखिएगा, कितना भी आदमी बड़ा बिजनेसमैन होगा, वो लोग वहां जूता रखने की सेवा के लिए वो लोग तड़पते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जब किसी का चरण उठा, सबसे ज्यादा आदमी को ईगो तभी नड़ता है जब उसको किसी का चप्पल, किसी का जूठा, सबसे बड़ा ईगो आदमी को तब नड़ता है। तो जब वो चीज उठाने में जब आपका हृदय प्रसन्न होगा, वो गुरु भक्ति आपकी वहां तक पहुंच गई। So you mean to say whatever you bow down to any work, that will break down your ego. And see, this Jupiter also, it's a knowledge and it's also sometimes create the ego. So if a person bow down to his Guru, so he surrender, and by surrendering he is taking a blessing and he's taking the kavach, what you say, it's a security from the Guru that I am still as like earlier. So that's simplicity he meant to say. And in the Gurudwara we have seen that so many people are so much rich. They forget about their richness and whatever their status in there in the society, but they just to collect in the shoe, they into the kitchen and everywhere, because that's the Guru has given the blessing that you should serve the society. Very good. और उसके बाद गुरु के द्वारा जो भी आज्ञा हो कि भाई गुरु की इच्छा है, समझ लीजिए कि भाई कहीं हॉस्पिटल बने, कहीं मंदिर देरासर कुछ भी बने, या कहीं अन्न क्षेत्र चालू हुआ, कहीं भंडारा चालू, गुरु के मुंह से अगर निकल गया तो वो ब्रह्म वाक्य है, मतलब भगवान बोल दिए आपको। क्योंकि 100 आदमी रोज खाएंगे, उसमें आप बताइए गुरु का क्या स्वार्थ है, आप बोलिए। जो प्रसाद पाएंगे उसमें गुरु का क्या स्वार्थ? Yeah, he meant to say that after giving the offering to the Guru, you have to ask what is Guru wish, what he want to do. See, that's all things, material things you are offering to the Guru. It's from your side you are offering, but also ask about your Guru that what is his wish, what he want to do something. If he wish to do something related to the society, for charity, for food, for education, you have to ask to your Guru that if possible I will able to do whatever your wish. So you have to also ask the wish to the Guru, because that Ichha Purti, see 11th house, here you are activating your 11th house by activating your Guru's Ichha. Jupiter is the Karak of 11th house. So if you are fulfilling your Guru's Ichha, then ultimately you will be completing or fulfilling your own desire. So that's nothing but the desire fulfillment of yourself and desire fulfillment of your Guru. So you have activated your 2nd house by bowing down. You have activated your 5th house by offering so many things, increasing punya. You have seen your Guru, that 7th house you have activated. You have done all the kriya, puja, dharmic vidhi, religious things. That's you activated the 9th house, and then ultimately you have to touch the 11th house by fulfilling his own desire, so that your desire will be automatically fulfilled.
Very great thing as mentioned. Very good. तो गुरु जी का इस तरह पूजन करके, भोजन वगैरह करके, उसके बाद हम गुरु जी को वंदन, फिर साष्टांग दंडवत नमस्कार करना है। और उसके बाद गुरु जी से आदेश लेना है, हम लोगों के लिए क्या आदेश है। फिर वो स्वयं कहेंगे, क्योंकि आप जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो गुरु महाराज अनुभवी रहते हैं। जहां हमारे और आपके विचार स्टॉप हो जाते हैं, वहां गुरु का चिंतन चालू होता है। इसीलिए गुरु की जरूरत होती है महाराज। बाकी तो सब हमको आपको सब मालूम है, ये कार्य नहीं करना चाहिए, इससे ये फल होता है, फिर भी हम करते हैं। तो गुरु होने से एक ही चीज, वो अपने तप का बल देते हैं आपको। वो जो साधना करते हैं अपने लिए, उनको तो कोई संसार है नहीं, वो साधना किसके लिए करते हैं कि भाई जो हमारे शरण में आए, हमारी दृष्टि जिसके ऊपर परमात्मा पड़े, उसका आप कल्याण करना। So at the time of leaving your Guru place, you also again have to bow down to Guru feet, and then you have to lastly ask your Guru what is his ultimate order to you. See, you have completed his wish, you are given the promise to complete his wish, but what is the order for you? So you have to always wait for the Guru Adesh. It is called Guru Adesh because he said that whatever the things we know, what to do, how to do, but that's a Guru who is a very experienced person, and being his experience, maybe your things will be getting more easier. So here you have to take an order from the Guru. If Guru said no order for you, you are free from this and you are blessed with this, that's your good luck. So here the Guru Pujan gets completed and you will be blessed by the Guru. So anything is left? बस गुरु महाराज को हम वंदन करके उनके चरण में आज का ये ज्ञान संगोष्ठी हम गुरु के चरण में समर्पित करते हैं। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So by this we are offering everything to the Guru. We both hope that you learn something from this video and you do follow this to get the blessing of a Jupiter, so that you will not face any problem related to the social, economical, financial, any problem in your life. Because this is a chance, as you can say, it's a golden chance you got to get a blessing from Jupiter or Guru, and whereby you will be getting a good blessing from the Guru. And I hope that you like this video. You can share this video to your, this is also kind of a gratitude, you can share this video to amongst your circle so that they also get benefited. Do share video, do like this video, and get a blessing from your Guru, and having a very light soul, bow down to your Guru. So herewith we end with this session. Hope you like this video. Do share your views in our channel. Thank you. Thank you very much. Namaste.